Hey, so let's look at what I mentioned yesterday. Basically, did not really have a plan at open, and I wanted the first candle to either close above yesterday's high for look for buying opportunities, or yesterday's low to look for shorting opportunities. That also did not happen. In Bank Nifty, they were both in Bank Nifty and Nifty. They were not no volumes, good volumes today, and Nifty was basically inside this till 2 o'clock. Was inside this buy zone where you had a buy volume yesterday, so very risky to short. But I did some scalp shots in the morning. The reason for that was, uh, if you look at, so let's look at the first three candles, and look at this tower volume which came in. This is a 3-minute chart, and when you zoom out, you can see that this is the zone where from on Friday and yesterday there was some resistance. So Friday you had a fall from 1790 to 16932, and yesterday, because there was it was in a bullish zone, you still had a fall from those levels. So I wanted this to close below VWAP and take a shot. My target was this candle break, which was yesterday's 11:15 low, and did not really catch all this. So once that broke, I got out. It was a scalp shot because I didn't really have a plan in the morning, and I did not really have a system trade also in the morning. So got out, and then I wanted it to, and then it became a very good buying opportunity, but I didn't really want to buy till I got a system trade. So I was looking for buying opportunities. I did post a system trade at, I think, 12:45. I wanted 12:45 to break low. If that broke low, my trade was to buy above 12:45, stop loss 12:45 low. 12:45 did not break low, so this did not trigger, and I did not really take this trade. So basically only one trade for me today. No trades in Bank Nifty. I don't really like structures where there are no volumes. So if you look at both Bank Nifty and Nifty, you had this in the morning in both Bank Nifty and Nifty. Nifty, you had a very big volume candle in the morning. Apart from that, very poor volumes throughout the day. Yep, so that was the trade for today. What am I going to do tomorrow? I want to see, again, no plans at open, but I want to see if 1 hour close happens below 911 or happens above 17112, first 1 hour candle. If nothing happens and if the candle is closing between this, then I'll probably look at structures or previous resistances or support to take a trade. Or if there are any good volumes in sell side or buy side, if it closes above 112 or below 911, then I'll probably look for selling opportunities below 911 and buying opportunities above 112. But that should happen in first 1 hour candle. Let's see. Thank you. तो कल का पोस्ट मार्केट मैंने पहले वो डिस्कस करते हैं. मैंने बोला था कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है सुबह के लिए, और अगर पहला कैंडल 1 आवर कैंडल अगर प्रीवियस लो के नीचे क्लोज होता है तो मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा, प्रीवियस लो के ऊपर क्लोज होता है तो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखूंगा. पहला कैंडल कहीं भी क्लोज नहीं हुआ, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, पर अगर आप जूम आउट करें तो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनता है 3 मिनट में स्कैल्प सेल के लिए. तो बेसिकली जब ये बॉक्सेस में रहता है तो मेरे को पसंद नहीं है वैसे शॉर्ट करना, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सुबह बहुत अच्छा एक वॉल्यूम कैंडल बनाए और रेजिस्टेंस पे बनाए. वो रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप लास्ट 2 दिन का देखेंगे तो वहीं से फॉल मिला है आपको 3 मिनट में, और इसीलिए मैंने ये यहाँ पे तो नहीं किया, लेकिन वीवैप के नीचे जब क्लोज हुआ तो यहाँ पे किया. स्टॉप लॉस ये था और टारगेट मेरा ये था, ये लो 11:15 का लो था, तो वो जैसे ही टूटा मैं निकल गया. फिर उसके बाद मैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था. मेरे सिस्टम में एक ट्रेड आया था बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लेकिन बाइंग के लिए, लेकिन फिर मैंने लेकिन वो ट्रिगर नहीं हुआ. ट्रेड ये था कि 12:45 के, अगर 12:45 कैंडल लो बना रहा है तो मैं उसके ऊपर बाय करूँगा. स्टॉप लॉस रहेगा 12:45 का लो, टारगेट रहेगा ब्रेक. ये मैंने पोस्ट किया था अपने चैनल पे, और ये नहीं हुआ क्योंकि 12:45 का कैंडल लो नहीं बना रहा था, तो ये ट्रेड में नहीं लिया मैंने. और ये भी शॉर्ट नहीं किया मैंने. तो बैंक निफ्टी तो मैंने किया ही नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में लास्ट 2 दिन से अच्छे वॉल्यूम्स है ही नहीं. कम से कम इसमें निफ्टी में इस जोन में तो था वो एटलीस्ट 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद जाके वो तोड़ा, जो कि यूजली मैं लेता नहीं हूँ शॉर्ट जब ये 2 बजे के बाद तोड़ता है तो अब कल क्या कर रहा हूँ मैं. सेम ओपन पे मेरा कोई प्लान नहीं है.
मैं देखूँगा कि ये कहाँ पे क्लोज़ होता है। अगर पहला कैंडल 117-112 स्पॉट के ऊपर क्लोज़ होता है तो मैं बाइंग के लिए देखूँगा। 911 के नीचे क्लोज़ होता है तो मैं सेलिंग के लिए देखूँगा। बीच में कहीं क्लोज़ होता है तो आज की जैसे मैंने कोई स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंस, सपोर्ट या वॉल्यूम स्ट्रक्चर बनता है तो मैं देखूँगा। सिस्टम ट्रेड आता है तो मैं देखूँगा। बाकी मेरे पास अभी भी 1700 कॉल है जो मैंने पोजिशनली लिए थे, जो प्रॉफिट में थे, अब नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, 2 दिन है अभी। थैंक यू।